आज हम एक कराची के स्टूडियो में हैं एंड वी हैव द मोस्ट स्पेशल गेस्ट we've ever had. He's my childhood hero. He's the Sultan of Swing and the greatest fast bowler of all time. Wasim Akram, thank you so much for being on the podcast. You're welcome. It's good to be here. Wasim bhai, and 99 के जितने players थे, I think वो World Cup was very emotional for me as a child and it was a great sort of moment. So let's sort of start with that, Wasim bhai. जो मैं अपने दोस्तों से उस दिन एक आर्ग्यूमेंट कर रहा था कि राइट नाउ द पाकिस्तान क्रिकेट टीम is the world number one team. Yes. Babar, Azam is the world number one batsman. Yes. This is one of the best teams we've had in a very long time. Absolutely. How many of these players make your great 1999 team? Look, it's very difficult to compare from era to era, different players, different personalities. But if I have I have to put myself on a spot. I suppose Babar comes in for maybe wajahat. Otherwise, I think we were doing well. In this Pakistan team, I must say, अब मजा आता है ground जाने में as a commentator. The way they are playing. Okay, winning and losing is part of the game. That's it. But the confidence they're showing, the togetherness they're showing, they look settled. And I feel very proud of, as a Pakistani, that, looking good, shaping up well, one of the best fast bowling attack in the world, number one better. Then we have this fighter Rizwan, then in between Nifty comes in. So, everything is going well for Pakistan cricket. शुक्र है अल्लाह का. अल्लाह का शुक्र है. और आपने अभी बात की about our bowling lineup. मुझे काफ़ी fascinating लगता है अगर आप parallel draw करें वही 99 से. So Haris Rauf is kind of Shoaib Akhtar. He's the quick. Shaheen is, like kind of like arm, you, like left arm, yes. swinging the ball. Naseem is kind of like Wakar bhai. Do you see a lot of parallels between them being that young team? Maybe not of 99 because आप उस time तक तो peak पे आ गए थे, but maybe a little younger than that. I mean, these boys are on the right track. All three of them. राउफ जो है वो तेज है. हमें पता है ठीक है थोड़ा वेवर्ड है थोड़ी मार पड़ती है बट विकेट टेकर है. He goes, he risks it and that's what fast ball is all about. Naseem Shah is getting quicker. Again, he gets wicket in the mid overs and then of course Shaheen who gets wicket early on. पता भी है बॉल अंदर आना है, पता भी है कि इसका full इसने करना है but still he gets wicket, he's improving. So they're on the right track. Like I said, it's difficult to compare. Shoaib Akhtar was very quick. Very quick. Like the fastest of all time. I mean like scarily quick. TV पे लगता है आप replay जब देखते हो बॉल आया 147 पे चला गया. In a real life, even in nets, हमें भी उस लेवल पे पहले शोएब की पेस का यूज टू होना पड़ता था. 2-4 गेंदें सिर्फ रोकनी पड़ती थी एंड देन रिएक्शन का टाइम नहीं था मिलता. एंड देन नसीम एंड वो अपनी एज के लिहाज से दे आर द राइट प्लेस एज फार एज बॉलिंग कंसर्न. बॉलिंग का पता है उन्हें बट आई थिंक लॉन्ग रन में व्हाट दे शुड लर्न इन माय ओपिनियन टू हाउ टू प्ले टेस्ट क्रिकेट. स्पेशली हारिस आई थिंक स्ट्रगल्ड अ बिट बिकॉज 10 ओवर तो कर रहा है वो. तो इसका मतलब उसमें जान है और वो आएगी इसमें सिर्फ फर्स्ट क्लास खेलने से. Of course, cricket is a mental game, right? लेकिन मैं आपसे ये पूछा था जिस तरह अभी रिसेंटली आपने कल परसों में हुआ as we record this, Afghanistan, I think Mujib and Rashid were batting. Yes. And they were unaware of the amount of balls जो रहती हैं. है ना? उससे पहले एक दफ़ा मैं एक इंजमाम भाई की स्टोरी सुन रहा था, इंजी भाई की, और मेरे लिए वो बहुत बड़ा मोमेंट था. एक दफ़ा सचिन आखिरी ओवर करा रहे थे एंड इंजमाम ने आखिरी बॉल पे चौका मारा था कवर्स के थ्रू आई थिंक एंड वेरी like we won that game, it was crazy. तो बाद में जब इंजमाम भाई का इंटरव्यू किया तो इंजी कहते हैं कि वो ना मुझे पता ही नहीं था कि इतनी बॉलें रह गई हैं और क्लियरली नज़र आ रहा था अफगानिस्तान वाली गेम में अगेंस्ट श्रीलंका के दे weren't aware. और मैं ये लोग इस तरह जो करते हैं कि कभी कभार कप्तान को पता ही नहीं होता कि सिचुएशन क्या है. गलत एक्स्ट्रा ओवर दे दिया. फॉर एग्जांपल उस दिन कोई कह रहा था बाबर ने एक्स्ट्रा ओवर दे दिया शायद आपको क्योंकि मैच सही नहीं की. मैच सही नहीं की. क्रिकेट में द पिच पे इतनी सारी डिफरेंट चीजें हो रही होती हैं राइट एंड डकवर्ड लोथ इज ऑब्वियसली सम सॉर्ट ऑफ एल्गोरिथम दैट्स हार्ड टू कैलकुलेट. व्हेन यू वर कैप्टन हाउ मच ऑफ हाउ अवेयर आर यू ऑफ दीज सिचुएशंस और डू पीपल फ्रॉम द बेंच मेक यू अवेयर ऑफ सच थिंग्स लाइक दिस? Even now if I mentor any team, if I'm in the dugout, I'm very super careful and organized. If something this happens, my guys, my manager goes straight to the third umpire or the referee and finds out the scenarios. It's not player's job. It's not captain's job. Captains had so much going. It's the management's job outside to get all the options ready even before they go into chase. उससे पूछो, दोबारा पूछो.
And this is again, you can't blame on anyone, any cricket board or ACC. It's the management job outside के अब मैं बाहर बैठ के मेरी जॉब क्रिकेट देखना तो नहीं है ना. मेरी जॉब है everything has to be organized for the players, उनके पास information हो. और वैसे भी once the first inning finishes, umpires comes out and he gives the Duckworth Lewis. पूरे मैच का आपको just in case दे जाता है वो. अच्छा. हाँ, वो आपको वो फोटोकॉपी मिल जाती है. तो फिर कैसे हो सकता है कि आपको बस पता ही ना हो? सुते होंगे और क्या हो सकता है. I suppose. And saying बाद में आके कि nobody told us. Go find out. Yeah, and I mean, it's not like the Sri Lankan players will come up to Hence, you spend money on a good analyst. He would have done all the maths himself. Or you just find the television guy, वो सामने producer आपके होता है, floor producer, उससे पूछो. उसको भी सिनारियो पता होता है, because सबसे पहले उनके पास सिनारियो आता है. So ये चीजें सबको पता होनी चाहिए. कुल्लू कोड़े बन के नहीं बैठ सकते वहाँ पे आप. Fair enough, man. That's a valid point. And मैं यही सोच रहा था कि it's so different. It was a big deal. Yeah. They could have qualified. Yes, of course. And they had 4 balls. अगर वहाँ पे मुजीब सिंगल ले ले, राशिद वहाँ पे. But why? Okay, fair enough. चलो गलती हो गई. But why block the 3 balls? That was bizarre. That Farooqi dude is a bit weird. Farooqi dude से याद है, since we're talking about it, what did you make of the man cut that day? Look, in the one-day series against. It's within the law. Once the law has been passed, then you just go with it. Okay, I'm all for gentleman's game. Then why there is a law? Agreed. खत्म हो गई ना बात. कोई argument करने की जरूरत नहीं. It depends on you as a person, कि as a cricketer, individual, कि करना है कि नहीं करना. But if it's within the law, it is within the law. Just मेरे नहीं ख्याल इस पे कोई argument बनता है. But Wasim bhai, I wouldn't have done it, sure. Yeah, I mean, if they do it in the 5th over with 2 wickets down and they're on top. 5th over में concentrate आप नहीं कर रहे हो, तो आप कर रहे हो तो 2 फील्डर सर्कल के बाहर छिक्के ना पड़ने शुरू हो जाए. तो they'll have to think bowler's mind as well. कि वो क्या सोचते हैं, कप्तान क्या सोच रहा है. But yeah, it's okay, it's done now. But again, impressed by Naseem, man. I'm the second time he's that unthinkable. Match winner. Unthinkable. He should really concentrate on his batting, especially for this last 2-3 overs. थोड़ा सा defense strong कर ले, 1-2 और variation ले आए. आज T20 format especially में, it's a specialized kind of a talent. Yeah. How to finish off in last 2 overs. Because कई दफा अगर आपका partnership जा रही है और 19th over में आपकी विकेटें गिर गई हैं 2 और आखिरी में आपको 9 चाहिए और नए 2 हैं, मुश्किल हो सकता है, मुश्किल होता है. बिल्कुल. And I was thinking, I mean, if we can't find a fast bowling, so of course there's Fahim, but if we're struggling to find, fast bowling all-rounders, could we work on Shaheen? Could we work on Naseem? They have to work themselves. They are working on it. I mean, Shaheen did well. PSL में मैंने देखा, उसने ऊपर 1-2 बैटिंग की, आगे घुमाई गया, but again, they're working hard. No doubt. I mean, they want to be an all-rounder. That'll be great for Pakistan cricket. Achha, let's move on to the sort of biggest story of all, which is Pakistan, India. Abhi Asia Cup, we're playing them again on Sunday. Then Yes, we are. Hopefully playing them again next Sunday, Yeah. final. Then inshallah World Cup, then World Cup final. विराट कोहली ज़्यादा लंबा नहीं चला गया. I have to bring you back. वन-डे सीरीज हमें मिलती नहीं है. हमने अपनी वन-डे सीरीज अपने दिमाग में थोड़ा मैप आउट कर ली है. लेकिन वसीम भाई, विराट कोहली was at I believe it was the FA Cup final. I'm not sure. It was the Manchester Derby, right? Where they asked him what the atmosphere was like, and he's like, "This is nothing. Pakistan India is the biggest game in sport." And that's what he said, if I'm not mistaken. Do you think Pakistan India is the biggest rivalry in all sports? There's no doubt about it. There's no debate on it. Just do the math. Talk about Ashes. Talk about soccer, EPL. कितने लोग हो सकते हैं? वहाँ 1.3 billion है, यहाँ almost 260 million है, 1.56 billion people. Pressure is different with news channels, with social media, with podcasts, with YouTube, with X/Twitter, Twitter/X, Thread, you name it. So that adds extra pressure. And these boys are from this generation, so they are social media people. Of course. You can't tell them not to be, because it's part of their kind of DNA. And do you think it makes that makes it a little bit harder as well, just because of... Probably these kids are used to it, I suppose. I'm not so sure. उनको used to है ना इन चीजों के, शायद उनके लिए it's okay. But I'm not so sure. मैं होता तो मेरे पे pressure पड़ता है, because मैंने तो बाद में आके social media सीखा है and realize it is what it is. Yeah. And I always thought social media will empower people, love
will be all over, more knowledge, but unfortunately, world is going the opposite way. It's a lot more sad stuff there now. Actually, let's talk a little bit about the previous Pakistani India game, and then we'll move on to the World Cup and stuff. जो Kandy में हुई थी. That over where, or right after the rain, where Shaheen comes in, one away, and then one inside. Virat's face, Kohli's reaction. That's prime Wasim Akram, huh? That's what you were famous for. आप जब इस तरह देखते हैं, how different is it for you? Are you like a fan like us now when you're watching them play? Is it very analytical? What goes through your mind when you see both something like of it? Fan / thoda assess. And like I said before, शुरू के शो में क्या है कि now I feel कि यार अब commentary में जाना है, अब मजा आएगा. हारें जीतें उलादा बात है, but ये टीम फाइट देगी. हमारे बॉलर्स की जब बॉलिंग कर रहे होते हैं, मजा आता है कमेंट्री करने का, एक्सप्लेन करने का. और जब शाहीन ने पहला ओवर किया, पहली 1-2 गेंदें निकली तो सारा कमेंटेटर्स पीछे भी जो बैठे हुए थे, they just went, whoa, this guy is nippy. So that makes your job easy, because if you're enjoying it, your team is doing well, fighting till the last ball, that makes a lot of difference. And coming back to Shaheen, कोई नहीं, I think suppose batter होता जो पहले 2 bowling, just length, it's all about length. You see, अब Shaheen knows as well. I think he realized it after his first spell. जब बारिश हुई, वापस जाके 10 मिनट बैठा on his own, then he realized कि मुझे length थोड़ी पीछे करनी है, because अब यॉर्कर के लिए तैयार हैं. So this is the length he has to learn more. इससे पहले बाहर जाए, अंदर आए, but problem बैट्समैन को होगी, because इसका जो अंदर आता है वो खेलेंगे अंदर के लिए इसको all the time, and that's where they probably miss it or probably nick it. And and they both, all 3 of them, they complement each other. Pressure off नहीं होने देते. Pressure जब off होता है, जबकि आप ये तीनों जब हटते हैं, अगर मैं ऑपोजिशन में हूँ तो मेरा प्लान यही है कि इनके तीनों के पहले 12-15 खेल रहे, दरम्यान में उन्होंने एकदम ही स्पिनर को दे देने हैं दोनों एंड से. Do you think that was the right decision from Babar? Look, I don't know. No. Okay, everybody's saying you should have gone for the kill. अब ये तो बड़ी फिल्मी सी बात करते हैं, हम going for the kill. I understand where they are coming from too, and I'm with them. But you see, sometimes जब जब अब टीम 4 आउट हुए हैं, for instance, तो आप एंड का सोचो 10 ओवरों का किसने करने हैं, आखिरी 6 का सोचो, क्योंकि 3 इसने 3 मैंने इसके रखने हैं, 3 इसके रखने हैं. एंड देन फिर उनको जो मेन बॉलर्स हैं फास्ट, आपके 2-2 के स्पेल कराओ, एक एंड से और एक एंड से स्पिनर को कराओ, ताकि प्रेशर एकदम ऑफ ना हो. It's easier said than done, but sometimes with experience, by experience I learned, शुरू में नहीं था होता, but 2 साल जब मैं 5000वीं दफा कप्तान वापस आया पाकिस्तान टीम में, तो तब मैं सीख चुका था कि उसी वक्त मैथ करना है सिचुएशन के मुताबिक. पता है रेजिमेंटेड नहीं हो, 4 मैंने करने हैं, 4 सकलैन ने करने हैं, वो इंस्टेंस मुझे पता है. बट समटाइम्स ये नहीं हो सकता. समटाइम्स सकलैन विकेट चाहिए, सकलैन और मैं 2-2 पहले कर लेंगे, वकार आ जाएगा या शुएब आ जाएगा या कोई आ जाएगा इन बिटवीन. वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए. Babar, from what us as fans see, may not be the most aggressive captain, the most striking captain. Imran Khan की तरह वो शायद speeches नहीं देते, or so it seems like. लेकिन ये है कि he keeps the team together. लगता ऐसे है कि पहली दफा मुझे ऐसे लगता है कि पाकिस्तान की टीम में बहुत अरसे बाद, after many years, एक camaraderie है. अब क्योंकि multiple environments में खेल रहे हैं, some bad as well, right? How important is having a settled and unit versus a captain with 90s team? It is very important, and credit to the leadership, Babar especially. उसको लड़कों को उसने confidence दी, and you're right, they do look like they enjoy each other's company. They do. It is true that they're like a family, and that shows the way they come on the field together and how they support each other on social media as well, in a way. I like that attitude. वो 90s में तो जिसको वाइस कप्तान बनाया, वो 2 घंटे बाद कप्तान बनने की तैयारी करता था. 1 दिन भी नहीं, 2 दिन भी नहीं, 2 घंटे बाद. Swai Moin के. Moin was the best vice captain I had. You see, the idea of a vice captain is freaking wait for your turn. Learn first. So that's the problem was in the 90s कि कोई एक सीरीज के लिए अनाउंस करते थे, अगर चेयरमैन बदल गया तो नीचे से 4 थे आ रहे हैं, just wait it out. But that wasn't the case. But now they settle. They know he's our leader.
and he knows these are my boys, and they seem to enjoying it, and that's good. मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि डू यू थिंक आप ना इतने बड़े स्टार थे कि यू इंस्पायर्ड जनरेशन एंड शाहीन, आमिर, वहाब, जुनेद, मतलब we have so many left arms quicks and for example India वाली side पे इरफान पठान, आशीष नेहरा, जहीर खान, अशदीप, there's so many, right? And all of them kind of want to be like you, right? What do you think, or who do you think from this part of Pakistan and India, after yourself, who do you think is the best left arm seamer? देखो चमिंदा वास का नाम नहीं लिया, उसके 400 विकेट हैं यार दोनों। नहीं वो मैं इंटरनेशनल पे इसके बाद आऊंगा कि स्टार्क, चमिंदा वास, मिचेल जॉनसन। ओके, तो सब कॉन्टिनेंट की बात, सब कॉन्टिनेंट पाकिस्तान से शुरू करते हैं। व्हाट अबाउट पीक शाहीन, पीक आमिर? राइट, आपने जिस तरह जब आमिर बचा था when he was swinging before the ban, and up maybe last couple of years Shaheen's peak so far of these two, who would you I think there's an all-round kind of a thing with a guy who can bat a bit and a little bit better fielder. I'll definitely go for Shaheen. Yeah, Amir was equally good, no doubt. I mean, जब वो आया था, the swing, the pace, and he's quite smart. You know, street smart bowler जिसे कहते हैं. बिल्कुल, yeah. बिल्कुल. And worldwide left armers में से is Chaminda Vaas up there? Mid-Stark? Chaminda Vaas is up there. Mid-Stark. Mitchell Johnson. Mitchell Johnson is what, yeah. Scarily quick. Yeah. Pace बहुत था वो. बिल्कुल. I'm meeting him, I think, वो पाकिस्तान का फर्स्ट टेस्ट 14 दिसंबर को है ऑस्ट्रेलिया में, पर्थ में. That'll be a big test for Pakistan cricket. That series, because पहला टेस्ट है पर्थ में. और पर्थ की जो नई विकेट है, जो वैका है, वैका तो नहीं है ना, नया ग्राउंड है जो, उस पे बाउंस वैका वाले से भी ज्यादा है. सो अब जब हम बाउंस की बात करते हैं, अब लोग जो क्रिकेट के लवर्स हैं उनको समझ नहीं कई दफा आती कि जो बॉल, अगर ये पिच है पाकिस्तान में, अगर मैं बैट्समैन हूँ, जो बॉल जहाँ ये कैमरा है वहां पड़ी है, मैं उसको फ्रंट फुट पे खेलूंगा. और यही आप पर्थ पे खेलोगे या ब्रिस्बेन में, तो आप ऐसे जाओगे, वो बॉल आपके सर से गुजर जाएगी उसी ठप्पे से. तो ये डिफरेंस है बाउंस का. लेकिन वो ऐसे करके छोड़ देते हैं, हमें आइडिया नहीं है, शुरू में नहीं होता, तो वही बॉल हम रोकते हैं, वो इधर चली जाती है स्लिप में. दैट्स द डिफरेंस. अच्छा, वसीम भाई, एक sort of parallel दुनिया में चलते हैं. I understand कि the modern day cricketers, it's hard to compare, etc. But you must watch them and think, okay, if you had to bowl, who do you think would give you the toughest time? Virat Kohli, Steve Smith, Kane Williamson, and I'll come to Babar in a second. But of these three, who do you think would? ये देखो, ये जब 90s में हम थे, ब्रायन लारा, सचिन तेंदुलकर, you know, Alex Stewart, even great Martin Crowe, Taylor, these guys were phenomenal. But on my day, I got all them out. We सबको out किया हुआ है. On their day, they got hundreds against us. 2 million were both. And same goes for these guys. On my day, it won't be easy for them or for me, but it'll be a good battle. You know, they're the greats of the game. It would have been a great battle. एक तरह से मैं, एक तरह से वकार, उधर कोहली बैटिंग कर रहा है, इधर, you know, it would have been nice and different. And हमारा माइंडसेट डिफरेंट है बॉलर्स का, आजकल के बॉलर्स का. we used to go all out attack, उसमें कुट भी पड़ी जाती थी, but then you got the wickets, right? yeah. अच्छा, वसीम भाई, कभी आपने शुगल में, क्योंकि चलिए इन तीनों को तो आपने शायद नहीं कराई होगी, कभी आपने शुगल में बाबर आजम या वन ऑफ द न्यू गाइज को कहा कि नेट्स में थोड़ी सी बॉलिंग कराई हुई है? शुरू में आई थिंक पहले साल बाबर आजम आया था PSL में, सांबा यूनाइटेड में. आई थॉट कि मैं भी, तब मैं 18 कदमों से करता था, तंग करता था सबको. दुबई की विकेट बाबर को आउट किया होगा, आई सपोज, बीट तो किया होगा उसको, बट वो 18 कदमों से फिर बेचारे थोड़े रिस्पेक्ट भी देते थे. बट नाउ आई थिंक लास्ट ईयर or year before I played one charity game in England. I bowled 4 overs. I couldn't move for 5 weeks. उसके बाद बस वही तौबा. चलिए, fair enough. अच्छा, वसीम भाई, last couple of questions and then I'll let you go. एक तो thank you for your time, but it's fun. अच्छा, एक cricket related and then एक non cricket related. So last cricket question is, मैं और मेरे दोस्त अक्सर ये आर्ग्यू करते हैं, who is the greatest cricketer of all time? I understand subjective है, but who is your favorite great of all time? Yes, if I have to pick 2 names, I'll go for Viv Richards and Imran Khan. Yeah, वो पैकेज पूरा था ना. वर्ल्ड कप भी जीते. वर्ल्ड कप क्रिकेट के एटिट्यूड्स ठीक हैं जो किए उन्होंने, पर उसके बाद उनका ऑफ द फील्ड एक ऑरा था, एक करिश्मा था, एक you know, मैग्नेटिक जो इनकी पर्सनैलिटीज थी, सेंस ऑफ ह्यूमर थे, वो देखा नहीं लोगों ने, वो मैंने देखा क्लोजली.
अच्छा, Wasim, my last question, and then I will let you go. Sure. This was a pleasure and an honor. अच्छा, मुझे बताएं कि outside of cricket, एक तो obviously you decided to book come out, you're doing lots of new things. Tell me a little bit about how you see the sports landscape of Pakistan and what needs to change. Sports landscape means every sport? Every or? sport. Cricket तो है ना, देखिए cricket is actually one of the most loved sports. बेचारे बहुत सारे और हैं जो हमें देखने को भी नहीं मिलते. You want me to be truthful or you want to be diplomatic? I want you to be as truthful as possible. There is no sport in Pakistan. अभी स्कॉश में कुछ जीते हैं हम after I don't know 30 odd years. हमारा एक लड़का है अरशद, वो अभी I think सिल्वर जीता है. We forget. हमें याद आता है अब एशियन गेम्स होनी है ना, अभी सून है ना एशियन गेम्स. सैफ गेम्स भी हो रही है ना. जो भी गेम्स अभी आनी है वो अभी से इंडियन टेलीविजन पे पिछले 2 महीने से वो ऐड चल रहे हैं, अपने प्लेयर्स को दिखा रहे हैं, उनको मोटिवेट कर रहे हैं, स्पॉन्सर्स को दिखा रहे हैं, यू नो दे प्रोमोज ऐसे सारे सुते हैं. ओनली क्रिकेट इज देयर. Unfortunately, I don't understand one thing in this day and age, why our big guns in this world want to be president of judo, फुटबॉल, हॉकी, उसमें है क्या पावर? इट्स ऑनरी जॉब एंड इफ यू कांट डू गुड डोंट डू इट. बट सम पीपल, आई डोंट नो व्हाट सॉर्ट ऑफ माइंडसेट इज इट. अगर जॉब करनी है तो पूरी करो, नहीं तो किसी स्पोर्ट को ऊपर ले आओ. अब नेबरिंग कंट्री को देख लो, मैंने फिर आर्टिकल पढ़ा कि उनका एक सेंटर है किसी शहर में ओलंपिक्स की और इस स्पोर्ट्स जो आती हैं is also funded by all the billionaires of India or millionaires of India. And it should be. All year round वहाँ पे sportsmen की training होती है, खाना, training, stay, everything is there. And then we want to win medals, and sports is very important part of any culture, any nation. बिल्कुल. Motivates you, it binds you as a nation. So वो मुझे समझ नहीं आती. में भी लोग कोशिश करते होंगे, नहीं होती होगी, but talent की कमी तो नहीं है हमारे यहाँ sports में. It's a sad sort of reality. Khair, this has been a dream come true. Wasim bhai, thank you so much for being on the podcast. Thank you guys for watching. If you like our content, please do subscribe to our channel, and we'll see you for the next podcast.